तिची आई आली होती. After the papers are being getting distributed, exactly 40 minutes time will be given to you. घेणार ना आफ्टर 40 minutes. Still I will give. हा तुम्ही काय टेस्ट अटेम्प्ट करा ना. टाइम व्हॅल्यूवर झालंय तुमचं प्लीज. लेक्चर आहे. First half an hour we'll spend in test and then we will continue with the lecture. I promised these guys that we'll have a test on Thursday. So here is Thursday and we are going to have the test. तो दे ना टेस्ट. तुला किती मार्क मिळतात बघ ना. येडच आहे. ते OMR शीट पण द्या. OMR शीट त्याला सांग. Go attempt the test. पहले ABCD कहीं तो भी मार्क करो. बाद में you can make the circles and making it to give you the OMR sheets. Try attempting. OMR sheets will be given to you. Later on, you can mark the circles. Till then, start trying the questions. We had decided to take at least 10 tests based on this chapter, 20 tests based on measures of central tendency in dispersion. जितने मार्क्स का वेटेज होता है उतनी टेस्ट होगी हर चैप्टर पर. फिलहाल कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि ये आपने खुद के लिए है. आपको कितना आता है ये वेरीफाई करने के लिए टेस्ट है. गो स्टार्ट. कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो. 40 मिनट्स का टाइम है. दिस इज एग्जैक्टली 15 minutes past 2. वी विल स्टॉप एट हाउ मच टाइम? वी विल स्टार्ट द लेक्चर एट व्हाट टाइम?
40 minutes, 5 minutes to 3 करो. सुपरविजन जैसे फालतू चीजों में हम एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाले हैं. ट्रस्ट योर सेल्फ. Make it sure to yourself that you're not going to copy from anybody's paper. That's of no use. All those who are online, the test paper will be uploaded very shortly. I'll send you the paper. You can solve it at home. Those who are online, I'm talking to you. Those who are offline, please go ahead. Full concentration.
Put your names on the paper. पेपर मीन्स आंसर पेपर, दैट OMR शीट. क्वेश्चन पेपर पे क्या करेंगे नाम डाल के? कहाँ कुछ क्या डालना है वो समझना चाहिए ना. तरी काहीतरी.
Get a little faster, get a little stronger.
Later on, you have to submit your OMR sheets. They will be assessed on the OMR reader. You will get the papers back. समझा समझा है क्या हो गया है क्या लास्ट 5 minutes to go किती time is an essence of this style of exam.
हो गया है क्या? Could you get that 16th question? Could you solve or not? Don't expect the problem should come in the straighter way, all the problem. Majority of the problems will be in the straight way, simple way, innocent way. But odd question can be of the little modified, which odd looking question. 16th क्वेश्चन आपको आया है क्या? देखो बाकी सब सारे क्वेश्चंस ये रूटीन क्वेश्चंस है. गुड क्वेश्चन ना 16 क्वेश्चन. ऑब्वियसली जो हमको आता है दैट इज द नॉर्मल ऑर्डिनरी क्वेश्चन, जो नहीं आता है वो गुड क्वेश्चन. सिंपल डेफिनेशन. Even 18th is a good question. Third is a good question. Chalo, stop writing. 40 minutes are over. How many questions could you do? Talk somebody. How many of you could get 20 or more? 20 or more out of 25. Time wise, huh? Okay. 15 to 20. 15 to 20. So if it is 15 to 20, what it means is that you are going to get around 60% of the questions on this. समझा ना आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, अपना कहाँ पोजीशन है अभी. तो अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 6 ऑफ देम. इसका सिंपल मीनिंग है उसका.
So this is how you have to go on accumulating the marks. Total 40 बन गई, total 50 बन गई, we are happy. भगवान ने जितना दिया है भेजा, उतने मार्क्स मिलेगा तो काफी हो गया. You want me to discuss those questions, couple of questions? ठीक है. Look at me. कैसे सोचना है देखो. सोच कैसे होनी चाहिए. पेपर का वर्डिंग क्वेश्चन का कुछ भी हो, फिर भी सोचने का ख्याल एक ही होता है, तरीका एक ही होता है, रास्ता एक ही होता है. दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे, फिर भी एक ही रास्ता सही होता है. Look at me for the 16th question. What do they say? Although they are online, please go away, don't listen, because otherwise when you solve the paper, you will not be getting the question that is unknown. Look, Mr. X invests P amount at simple rate of interest of 10%, Y invests Q 5% annually. At the end of the 2 years period, they are getting the same amount of interest is same. So according to the first one, the simple interest, according to the second one, the compound interest, these compound interest and simple interest, they are the same. So it will be P into N, N is 2 into R, R is 10, and that over 100. Now what is the formula for the compound interest? It is P. It will be 1 plus 10 over 100, that raised to 2, and that minus P. ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना प्लीज. अभी ये क्यू है, इसका प्रिंसिपल कितना है क्यू. नो प्रॉब्लम. So what it means is that this is 20p over 100. What it means is that this is p by 5 is equal to q has been taken common. This will be 1.1 and that raised to 2, that minus 1. अभी ये मेरे को बोलो कैलकुलेट करके कितना आता है. तो p by 5 is equal to q into what? 1.1 का स्क्वायर 1.21, 1.21 माइनस 1 इज 0.21. करेक्ट. मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन भेजा कड़क है, इसलिए वो मैंने डायरेक्टली किया. So it is going to be 0.21, and what it means is P is equal to Q into 0.21 into 5. So it will be 5 into 21 over 100. So what it means is Q into, is that 21 upon 20? Oh, sorry. Compound interest is 5%. In that case, what is this? I just wanted to show you what mistakes you do in the exam. So 1.05, that raised to 2, and that minus 1. So P by 5 is equal to Q. अभी ये बोलो कितना आता है? 0.1025, that is 1025, that divided by 10,000. Is that? समझो या नहीं समझो? समझो. So फिर P is equal to Q into 1025 into 5 and that divided by 10,000. अभी कितना होता है देखो. ये सिंप्लीफाई करो ना, तो कौन सा ऑप्शन आता है वो आपको समझेगा. तो पहले तो ये 5 इसको ये करेगा, तो फिर क्या होगा? इज 2000, राइट. फिर एक 5 से मल्टी डिवाइड करेंगे तो P इज इक्वल टू Q. विल इट बी व्हाट? 205 डिवाइडेड बाय 400. फिर 5 से डिवाइड किया तो P इज इक्वल, ऑफकोर्स कैलकुलेटर पे आसान होगा. फिर दिस इज 41 एंड दैट डिवाइडेड बाय 80. तो है क्या इस ऑप्शन? इस ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन. समझा? So tell me, was it a difficult question? I know that was a different question, but that was not a difficult question. Method was same, formula was same. Don't give up. The only way of losing the battle is to surrender. जब तक सरेंडर नहीं करते हो, जब तक शरण नहीं आते हो, तब तक आप कोई भी बैटल लूज कर ही नहीं सकते. समझा?
ठीक है क्या? फिर 18th was also a good question. क्या करेंगे 18th क्वेश्चन में? 44,000 is divided into 3 parts such that 2, 3, 4 years the corresponding interest is equal. Rates of interest are given to be the same. What is the smallest part of the sum? क्या कहेंगे? What is the smallest part of the sum? What will you do? XYZ कहो, ऐसा कुछ तो भी कहो, XYZ, ABC कहो, कुछ भी कहो, क्या कहेंगे? पहले पार्ट में क्या होगा? पहले पार्ट में क्या होगा? 44,000 divided into 3 parts corresponding interest rates are after the 2, 3, 4 years, 2, 3 and how many? 6 years. Simple interest is given to be 6%, 8% and 6% respectively. तो क्या कहेंगे? इंटरेस्ट इज सेम ना? तो पहले केस में क्या होगा? पहले केस में होगा x मल्टीप्लाइड बाय बोलो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100. कहो ना, समझ गया. दिस इज इक्वल टू y इंटू 3 इंटू 8 divided by 100. This is equal to z into how many? 6 multiplied by 6 that divided by 100. तो ये 100 वैसे भी कट होगा. What it means is 12x is equal to 24y is equal to 36z. फिर 12 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना? तो x is equal to 2y is equal to 3z. और ये x, y और z की टोटल जो होगी वो 44,000 है ना? तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 44,000. अभी x का मतलब है 2y, है कि नहीं? x का मतलब है 2y, तो इट विल बी 2y प्लस वाई. z का मतलब कितना होगा? 2/3z, 2/3y. चेक और कंफर्म. 2/3y. दिस इज इक्वल टू 44,000. यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी क्या है? हो मैंने की. तो इट विल बी 6y प्लस y प्लस 2y दैट डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 44,000. तो फिर प्लस 3y. तो फिर अब ये 11y आता है क्या? तो 11y इज इक्वल टू 44,000 दैट मल्टीप्लाइड बाय 3. तो फिर y comes to be what? 12,000. तो y comes to be 12,000. तो फिर x कितना होगा? x होगा 2 इंटू वाई, दैट मीन्स 24,000. और फिर z विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 12,000. गुड क्वेश्चन. तो ये 8,000 हो गया क्या? तो फिर उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट इज व्हाट? 8,000. आया है? किसी को मिला था ये आंसर? थोड़ा सा अलग है ना? थोड़ा सा अलग तो एक्सपेक्ट करेंगे ना? ऐसा नहीं होगा ना कि सब फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे सब क्वेश्चंस तो नहीं हो गए ना. कुछ क्वेश्चंस हो गए, एक दो क्वेश्चंस ऑड क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं. गुड क्वेश्चन दैट वाज. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं रात को. पर रात को जो करना है उसके बारे में पहले दिन में सोचकर रखना पड़ता है ना, क्या करेंगे, तो वो हम कर रहे. समझा? इतना. फिर व्हाट अबाउट बाकी सब क्वेश्चन जो है? 23rd आया क्या? विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8.2% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 8.3%. हर केस में ए निकालो, जिसका ए ज्यादा होगा वो आंसर होगा. तो टेल मी विच आंसर इज करेक्ट. करो करो करो, अगर नहीं किया तो करो. फर्स्ट केस में क्या होगा? पी. तो अब पी इज इक्वल टू 100, और पी वैसे भी रखा पी तो भी चलेगा. It will be 1 plus quarterly है तो 2/100 that raised to 4. अगर 100 कहा P और N1 कहा. अभी सेकंड केस में क्या होगा? It will be 100 1 plus
4.1 over 100 that raised to 2. और सेकंड केस में क्या होगा 100 into bracket 1 plus 8.3 into 1 over 100. तो कौन सी अमाउंट ज्यादा है वो देखना पड़ेगा बस. समझा क्या मैंने क्या किया वो. टेक p is equal to 100, टेक n is equal to 1 year. ऐसा क्वेश्चन किया है हमने क्लास में. So tell me what is the answer. Which investment is found to be better? जो करना है वो इतना परफेक्ट करो कि आपको एक भी उसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में. जो करना है वो परफेक्ट करो. आया विच इज बेटर. आम्हाला काय माहिती म्हणून. सेकंड एंड थर्ड आर इक्वल. नहीं. देन second seems to be better. Second seems to be the best for that matter. It's not second or third, na? It's only second. Check. बाकी तो ये सिर्फ नॉर्मल साधारण क्वेश्चन है, वो तो आपको आएंगे. फिर भी नहीं आया है तो घर को जाके वापस सॉल्व करो. पेपर मैंने भेजा है ग्रुप पे, आपके पास हार्ड कॉपी भी है. समझा बाळांनो. These three questions were the good questions. They were not difficult, they were different. हो गया क्या? I come back to the discussion that we had left incomplete yesterday. Look at me. Stay back. अभी कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं. Stop talking. Keep the papers in the bag. और टेस्ट लेंगे ना हम, इस चैप्टर पे भी लेंगे, बाकी सब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे 20 पेपर्स लेने वाले हैं. तो ईच टेस्ट शुड बी बेटर देन द प्रीवियस. ये सेम प्रिंसिपल ध्यान में रखो बस. समझा? गुड. करूँ का शुरू रिकॉर्डिंग. So here we start. We said earlier on, 1 minute please. Simple line diagram is used when there is one time series. Multiple line chart is drawn when there are more than 2 time series with the same unit of measurement. Multiple axis chart is used when there are multiple time series with the different units of measurement. जायचं ना पुढे, आगे जाने का है ना. तो साइलेंस. Silence, otherwise you will have to observe the silence of 1 minute in the memory of foundation. I can understand getting back from the test into the studies is difficult, but it you have to do now. You are the professionals. Look. So we said single simple line chart is drawn when there is a one time series. When there are a lot of fluctuations in the data, we use the ratio chart or the logarithmic chart. When there are many time series with the same units of measurement, we draw the multiple line chart. And when there are different units of measurement for the different time series, we use the multiple axis chart. We then further said that this line diagram is one dimensional. Line diagram is one dimensional. But then we consider further that the second type of the diagram is a bar diagram. Height of the bar is equal to the y value. So there can be the simple bar diagram when there is only one time series. There will be multiple time series, and we use either the multiple bar diagram or the divided bar diagram. In multiple bar diagram, comparison between the time series is possible, but the relation with the totality is not possible.
In divided bar diagram, we can have a comparison between the time series and also the relation with the totality. समझा ना? Relative advantages and disadvantages. Now this bar diagram is a two-dimensional diagram. But instead of using these bars, if you use the cuboids, then it becomes a three-dimensional diagram. The other way, third way, is to draw the pie diagram. And the central angle is equal to value divided by total value multiplied by 360 degrees. Pie diagram is a two-dimensional diagram. But if we use the disk in place of circle, it becomes a three-dimensional. इतना हमने कल कहा था. But अभी कभी कभी क्या होता है, दिल में ये ख्याल आता है कि you consider the classes. You consider the classes. Suppose you are considering the marks. And I consider the marks are between. The classes are what? The classes are, suppose, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. And always remember, frequency is nothing but the number of people. Frequency always represents number of units. Frequency always represents number of people generally. Suppose this is what 10 and this is 15 and this is 17, this is 5, something like that. Then what I will do is I will consider on x-axis I will take the classes. On the x-axis I will take the classes 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like that. Now on y-axis I will take the frequency, number of people. So for the first class 0 to 10, the height is of 10. Height is of 10. अभी होता है क्या? We draw the bar. For the next class that is of height 15. So ये जरा ज़्यादा होगा height. अभी this is going to be for the second year. Similarly, we are going to get the graphs for the further years, for the further classes. अभी मेरे को बोलो, on x-axis what do you have? On x-axis what do you have? On x-axis you have the classes. On y-axis you have the frequencies. By the way, that is the MCQ. Now the height of the bar will be equal to the frequency. And the width of the bar is equal to the class width. What do you mean by class width? That is upper limit minus lower limit. So in our example, say that it could be 30 minus 20, which is equal to 10. So what is important here? Height is frequency, width is class width or class interval. Class width or class interval. Now this is the histogram. So when do we draw the histogram? We draw the histogram when it is asked in the exam. When do we draw the histogram? When you have got the frequency distribution. So यहाँ लिखो, histogram is used when there is a frequency distribution. Histogram is drawn when there is a frequency distribution. When there is a frequency distribution. And when there is a classes and the frequencies, it should be the group frequency distribution. The classes and the frequencies. So when do we use the histogram? When we have the classes and the frequencies, that means we have the group frequency distribution. Importantly, class interval is the width or breadth. Frequency is the height. Frequency is the height. But कभी कभी क्या होता है, I take the classes of different widths. I take 0 to 10, 10 to 40, 40 to 100, something like that. So if the widths are different, then what happens is that the breadth is considered to be the frequency density. क्या होती है वो हम देखेंगे. But frequency density, for that matter, try to understand, is the frequency upon the width of the class. That is frequency upon the class width.
तो जो ब्रेड्थ होती है, जो विड्थ होती है, दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. So the classes may be of the equal length, classes may be of the different length. If the classes are of equal length, class width is, or class interval is width of the bar. But if the widths of the classes are different, देखो 0 to 10 की width कितनी है 10, 10 to 40 की कितनी है 30, then what 40 to 100 की कितनी है 60. In that case, frequency density is the width. And what is frequency density? That is equal to frequency divided by the class width. ये हम बाद में भी देखने वाले हैं. फिलहाल सिर्फ इतना MCQ के लिए लिखो. What I do next is, for example, look at this. I draw the histogram. समझने की कोशिश करो. I draw the histogram and I consider the midpoints of the upper edges of the bars. I find the midpoints of the upper edges of the bars and connect them by the line segments. Connect them by the line segment. ही लाइन वाटत नाही, हा लाईना वाटतोय है की इतका जाड आहे. And that is known as the frequency polygon. That is known as what? Frequency polygon. However, instead of connecting these midpoints by means of the line segments, if we draw the smooth freehand curve like this, it becomes the frequency curve. So tell me, how do we get the frequency polygon? Connecting the midpoints by means of the line segments. And how you get a frequency curve? By connecting the midpoints by a freehand curve. अभी ये जब कर्व आप निकालते हो, समझने की कोशिश करो प्लीज. ये जब कर्व आप निकालेंगे तो कभी कभी क्या होता है, बिजनेस शुरू में लॉस में जाता है, प्रॉफिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. बट वंस यू डेवलप द लर्निंग एक्सपर्टाइज, the profit starts increasing and it goes like this, it goes up. So this is known as a J-shaped curve. कभी कभी उल्टा होता है कि ये प्रॉफिट बहुत टाइम तक नीचे आता है और only for short period it goes up. That is the inverted J-shaped. कभी कभी वो U-shaped हो सकता है, शुरू हुआ कम हुआ फिर एकदम बढ़ा. कभी कभी वो inverted U-shaped हो सकता है. कभी कभी वो inverted U-shaped हो सकता है. कभी कभी वो S-shaped हो सकता है इस तरह. कभी कभी वो inverted S-shaped हो सकता है. लेकिन जनरली we see the curve that is a bell shaped curve, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है. नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, समझा ना? नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड. 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है? कितने अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है? 2 3? हाँ, तुझे किती आहेत? तो अगर तो तेरे 10 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं जमा तो तेरे को, तो यहां क्या होता है? देखो शुरू में ग्रोथ स्मॉल होती है, देन इट गोज टू द पीक एंड देन ग्रेजुअली इट कम्स डाउन. विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर. सो दिस बेल शेप्ड कर्व is the most commonly observed curve. तो यहाँ बेल शेप कर्व में लिखो that this is the most commonly observed curve, most commonly found curve. Bell shaped curve is the most commonly observed curve. Is the most commonly observed curve. समझा? तो बहुत सारे एमसीक्यूज हमने यहां देखा है. आज का होमवर्क आपके लिए ये होगा कि जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें किया है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में, उसके एक लिस्ट करो जो हमने करना शुरू किया था क्लास में. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंटिन्यूड विद द सीक्वेंस. तो हर एक पॉइंट एक, अभी ये बेल शेप कर्व इज द मोस्ट कॉमनली ऑफ द कर्व, ये एक एमसीक्यू है. समझा ना? हिस्टोग्राम इज यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट टू फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक एमसीक्यू है.
बार डायग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, ये एक एमसीक्यू है. Central angle is equal to value upon total value into 360 degrees. This will give you one MCQ. So in statements का collection, you have to make a bank of statements. Statement banks का और फिर theory will be very simple. I wish to take you ahead to the further part of the discussion, but I am afraid we cannot be taking much. So we'll postpone the discussion for tomorrow. बट कल तक ये इस चैप्टर की एक नोट बैंक पूरी करो. People are looking for vote bank. We will be looking for note bank. And once you get the note bank, you will have around you a vote bank. Vote bank. Yeah, tomorrow we'll continue with this chapter. Huh. नमस्कार मंडळी, कसं काय तुम्ही? सॉरी तुझं मैं लेता है इधर
इधर नहीं आता ब्रो, उधर इधर तक से नहीं नहीं, ये देखना अपन आ रहे खो थे मैं जाऊँ नाही करणार आहे
हॅलो हॅलो शांताबाई 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 हॅलो